बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद MCQs ऑफिशियल में द होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ जनवरी टू दिसंबर वन लाइनर जितने भी इवेंट्स हुए हैं साल 2024 में वो तमाम शेयर करेंगे और वो तमाम होंगे वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है। बहुत लोग सवाल करेंगे पीडीएफ फाइल से रिलेटेड और या उनको ये तजस्सुस होगा कि पीडीएफ फाइल अवेलेबल होगी कि नहीं होगी। सो यस, पीडीएफ फाइल इसकी अवेलेबल है। ये वाली लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। तो जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे सो ये जो पहला नंबर जो लिंक होगा वर्ल्ड करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल, इस पर आपने क्लिक करना है। सो जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो इधर पहले नंबर का जो क्लिक होगा इस पेज के अंदर वन लाइनर इंटरनेशनल करंट अफेयर जनवरी टू दिसंबर 2024। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पीडीएफ फाइल पेड है या फ्री है। सो वो तो आप इस फाइल को डाउनलोड करके आपको पता चल जाएगा, या हम वीडियो के लास्ट में आपको ये बताएंगे कि ये पेड है या ये फ्री वर्जन है। ठीक है। और उसके अलावा हमारे चैनल पर एमसीक्यूज प्लानेट ऑफिशियल चैनल पर मंथली बेसिस के भी करंट अफेयर्स अपलोड होते रहते हैं। ठीक है। सो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो और साथ ही साथ साल 2024 में जितने भी पेपर्स हुए हैं तो उन तमाम के एमसीक्यूज भी हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पर भी ये तमाम चीज़ें अवेलेबल है। और ये वाली फाइल जो है ये आपको फ्री टू डाउनलोड है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री टू डाउनलोड। अच्छा जी, सो डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट्स की जाने बात है और ये रिवीजन वीडियो है। सो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को कम टाइम में कवर किए जाए। ठीक है। तो फर्स्ट वन जो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट डीप सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। सो इसका क्या नाम है? मतरबारी पोर्ट। सो ये पहला डीप सी पोर्ट है बांग्लादेश का। ठीक है। विन कासिम सुलेमानी टॉम वाज अटैक बाय टू बम एक्सप्लोजन। सो कब कासिम सुलेमानी टॉम जो कि ईरान में वाक़या है, सो इस पर टू बम एक्सप्लोजन हुए 3 जनवरी 2024 को। ठीक है। हु क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक ऑन कासिम सुलेमानी। ठीक है। सो ISIS के। ठीक है। और ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ब्लेम विच कंट्री फॉर द अटैक ऑन कासिम सुलेमानी टॉम। सो उन्होंने किस कंट्री पे ये ब्लेम लगाया? इसराइल पर। ठीक है। In January 2024, which country launched a satellite named Einstein probe? So, China. Which animal has recently been declared the national symbol of Kyrgyzstan? So, snow leopard ये भी national symbol है किर्गिस्तान का। ठीक है। Which company has decided to introduce so-called co-pilot key in PC कीबोर्ड? सो माइक्रोसॉफ्ट ने co-pilot की। सो जैसे कि हमारे पास चैट जीपीटी है, सो इनका co-pilot है। सो आप सीधा उस की पे जाके इस AI की जो फंक्शनलिटी है उसको आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है। 2024 बांग्लादेश जनरल इलेक्शन टुक प्लेस इन बांग्लादेश ऑल्सो। 7 जनवरी 2024 को जनरल इलेक्शन हुए बांग्लादेश में। ठीक है। NATO has signed a contract to buy 1000 units of which missile defense system? So Patriot। NATO जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन है, सो उन्होंने ये 1000 यूनिट्स बाय करने का सोचा। जनवरी 2024 के ये सारे इवेंट्स हैं। In which country is the Al Udeid Air Base located? ठीक है। Where the US has recently extended its military presence for another 10 years. So ये Al Udeid Air Base, ये क्या important point है, ये कहाँ पे है? कतर में वाक़या है। Which Chinese city hosts the annual ice and snow festival known for its large scale ice sculptures? So Harbin। ठीक है। so ये Chinese city है। When US and UK launch air and sea strike against Houthi military targets in Yemen। सो 12 जनवरी 2024 को। ये जनवरी में जब उन्होंने पहली बार स्ट्राइक्स किए तो ये 12 जनवरी 2024 को की। इन जनवरी 2024 which countries launch air and sea strike against Houthi targets in Yemen? तो ये US एंड UK ने किया। अब एग्जाम्स में कभी कभार क्वेश्चन सेम होते हैं बट उनकी वर्डिंग को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। सो सेम इन दिस केस इन दोनों MCQs में हुआ है। ठीक है। The first global health security summit was held in which city? इस्लामाबाद में फर्स्ट हेल्थ ग्लोबल सिक्योरिटी समिट हुआ था। The Global Health Security Summit 2024 was held in which country? तो पाकिस्तान में हुआ था। Which country has been recently designated as countries of particular concern by the US for several violation of religious freedom? So China, North Korea और पाकिस्तान इन countries को recently साल 2024 में countries of particular concern की लिस्ट में डाला गया है US की जानिब से। Which country filed a genocide case against Israel at the International Court of Justice? So साउथ अफ्रीका ने इनके खिलाफ पहली कंट्री थी जिन्होंने इसराइल के खिलाफ केस दायर किया ICJ में।
When ICJ starts hearing of South Africa genocide case against Israel, so 11 जनवरी 2024 को इस केस की समाप्त शुरू हुई. In January 2024, who has been chosen as the president by Taiwanese voters? So William Lai Ching-te. So ये जनवरी 2024 में प्रेसिडेंट बने ताइवान के. 2023 Skytrax prestigious award. Which airport was honored with the title of the best airport 2023? So ये सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट है, so ये बेस्ट एयरपोर्ट है in the world for year 2023. In January 2024, which country signed a deal with US to buy 400 long-range Tomahawk missiles? So Japan. फरवरी की जानब आ जाते हैं. Which country recently adopted the Nagoya Protocol on access and benefit sharing? So Cameroon. On February 2024, Chile ex-president died in a helicopter crash named, so उस president का क्या नाम? Sebastian Pinera. ठीक है. What is the theme of the World Pulses Day 2024? So pulses, nourishing soils and people. So ये theme था. What is the theme of World Radio Day 2024? So radio, a century informing, entertaining and educating. ठीक है. Which country ranks top in the Economist Democracy Index 2024? So ये नॉर्वे है. Which country is at the bottom of the Economist Democracy Index 2023? So ये अफगानिस्तान है. तो मेंसाई फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो ये जापान में ये फेस्टिवल मनाया जाता है. वेयर वाज द 60th म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सो ये जर्मनी में हुआ साल 2024 में. 60th एडिशन था इसका. So the 60th Munich Security Conference will take place from February 16 to 18, 2024. Which country become the first Orthodox majority nation to allow same-sex marriage? So Greece जो है ये first Orthodox majority nation है जहाँ पे ये चीज़ allow की गई है. Recently, NASA and which country space agency have joined to launch the world first wooden satellite? So Japan. ठीक है. What is the name of the world first wooden satellite? So Landsat 9 at the UNSC, यानी कि UN Security Council on February 21, 2024. Which country vetoes UN ceasefire call for Israel Gaza fighting? So USA ने इसको veto किया. Recently, scientists discovered the world's largest snake in which forest? So वो किस forest में था? Amazon rainforest में. In February 2024, scientists discovered the world's largest snake in the Amazon forest in Ecuador named. So उस अभी snake का नाम क्या है? So Eunectes acayima. ठीक है. Which country is the most liberal country in the world 2024? So reports के मुताबिक ये स्वीडन है. Recently, where was the 30th ministerial conference of the WTO यानी कि World Trade Organization held? तो अबू धाबी में ये हुआ था 30th जो एडिशन है. The WTO 30th Ministerial Conference जिसका short form MC13 है will take place from. So ये किस दिनों में हुआ था? 26 to 29 February 2024. The 7th summit of the gas exporting countries forum will be held in. So ये कहाँ पे हुआ था? इसका जो 7th edition था एल्जियस अल्जीरिया में. और ये मार्च की जाने आ जाते हैं. So connecting people and planet, exploring digital innovation and wildlife conservation is the theme of which international day? So ये वर्ल्ड वाइड डे 2023 का थीम था. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे being observed every year on so March 2023. On March 1st 2024, which country successfully launched its domestically manufactured Pars 1 remote sensing satellite into orbit? So ईरान ने Pars 1 नामी सैटेलाइट जो है ये कमर 2024 को ऑर्बिट भेजा. The 7th summit of the gas exporting countries will be held on. So 2 मार्च 2024 को ये हुआ. Which country will host World Athletics Championship 2025? So Tokyo, Japan. World Athletics Indoor Championship 2024 was hosted by. So अब जो इंडोर चैंपियनशिप थी एथलेटिक्स की उसको किस कंट्री ने होस्ट किया? ग्लासगो, यूके. सो यूके ने होस्ट किया सिटी वो ग्लासगो थी. World Obesity Day is being observed every year on March 4. Obesity and youth, young people catalyzing change is the theme of which international day in 2024? So ये World Obesity Day का theme था. Recently, which country parliament has approved a controversial anti-LGBTQ bill, the Human Sexual Rights and Family Values Bill? So गाना ने ये अप्रूव कराया है. Which country become the 32nd member of the NATO? So स्वीडन जो है ये 32वां मेंबर बन गया है नेटो का. अब नेटो में टोटल 32 मेंबर्स हैं.
Which country become the first country to make abortion a constitutional right? So फ्रांस में जो है अभी अगर कोई भी औरत abortion कराना चाहती है so ये उसका constitutional right है वो करा सकती है ठीक है. The theme of the International Women's Day 2024 is Aspire Inclusion. Recently, Maldives has signed a defense agreement with which country for obtaining non-lethal weapons and training? So China. Which two countries are in race to build nuclear power plant on moon? Russia and China. Philippe de Gaulle, naval commander and son of French leader, dies at the age of dash on March 12, 2024. So 102 साल की उम्र में उसकी मौत वाक़या हुई. Which country has recently ordered to establish military port in Gaza? US. Second, Thomas Shualref, recently seen in the news, is located in which of the following seas? South China Sea में ये second Thomas Shualref ये वाक़या है. India has tested which missile in March 2024? So Agni 5 इन्होंने टेस्ट किया. Recently Nepal has declared which city as its tourism capital? So Pokhara को नेपाल ने ये जो है वो डिक्लेयर किया. Which day is celebrated as World Sparrow Day every year? So March 20. अप्रैल के करंट अफेयर्स की जाने बात है. So on April 13, 2024, Iran and its proxies attack Israel with about dash drones and multiple ballistic missiles. So 300 ड्रोन्स के साथ ईरान और इसकी प्रॉक्सीज ने वो इसराइल पर 13 अप्रैल 2024 को अटैक्स किए. In April 2024, Iran launched retaliatory attack against Israel with drones. The attack was codenamed as so इस अटैक को क्या नाम दिया गया? True Promise. On 13 April 2024, which country seizes the MSC areas a Portugal's registered Madrid freight container ship owned by Zodiac Maritime? So ये 2024 है, सॉरी यहाँ पे 2023 लिखा गया है. सो इस MSC एराइज शिप को जो जिनका ताल्लुक यानी कि ये एफिलिएट थी एक जूश बिजनेसमैन था उसके साथ, ईरान ने इस शिप को वो कैप्चर किया. Which country has recently declared a federal emergency in Orenburg region due to the viral river flooding? Or so Russia. According to the 2024 report from the new Lancet Commission, what is the projected number of annual deaths from breast cancer by 2024? So 1 million यानी कि 10 लाख करीब जो है वो breast cancer से हो सकता है कि मर जाए साल 2040 तक. In April 2024, which country vetoes a UN Security Council resolution supporting the state of Palestine joining the यूनाइटेड नेशन? सो यूएसए ने जो है ना इसको एक बार फिर से वीटो किया. इससे पहले सीज फायर को वीटो किया था, फिर अप्रैल में जो है ना स्टेट ऑफ फलस्तीन को वीटो किया. हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द सेनेट? सो ये यूसुफ रजा गिलानी है. ये तो पाकिस्तानी रिलेटेड है बट ओके. एन ऑक्यूपेशन प्रोटेस्ट by pro-Palestinian student at Columbia University began on. So ये कब हुआ था? 17 अप्रैल 2024 को. When did Israel launch a retaliation attack against Iran in response to the April 2024 Iranian strike on Israel? So 19 अप्रैल 2024 को इसराइल ने स्ट्राइक किया. So general elections in India. So वो कितने फेजेस में हुआ? 7 फेजेस में 19 अप्रैल से लेके 1 जून 2024 तक ये जारी रहे. In April 2024, the US House of Representatives passes a series of bills that would provide $billion in military aid to countries including Ukraine, Israel and Taiwan. So $95 billion जो है ना वो इन तीनों countries को दिए जाएंगे. ये अप्रैल 2024 में ये इवेंट हुआ था. IP and SDGs Building Our Common Future with Innovation and Creativity is the theme of which International Day? So World Intellectual Property Day. Which country will host the special World Economic Forum meeting on global cooperation, growth and energy? So सऊदी अरेबिया ने इस स्पेशल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीटिंग को होस्ट किया. ठीक है, अभी मई की जाने आ जाते हैं. सो विच कंट्री कट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल ओवर गाजा वार इन मई 2024? तो कोलंबिया ने मई 2024 में इसराइल से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो ख़त्म किए. विच कंट्री रिसेंटली बैन अल जजीरा इन मई 2024? सो इसराइल ने अपने मुल्क में अल जजीरा को बैन कर दिया मई 2024 में. व्लादिमीर पुतिन was sworn in as president of Russia for dash term in May 2024. So पांचवी बार वो मई 2024 में रशिया के प्रेसिडेंट मंतखब हुए. Who was sworn in as the first minister of Scotland after the resignation of Hamza Yusuf in May 2024? So John Sweeney. ये हमजा यूसुफ के बाद
First minister है स्कॉटलैंड के. Which country to join South Africa genocide case against Israel at ICJ? तो तुर्की ने भी फिर जो दूसरी कंट्री थी वो तुर्की थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका को ज्वाइन किया. The first patient, 62-year-old Richard Slamin of Weymouth, Massachusetts, to receive a genetically modified pig kidney transplant on March 16, 2024, died on. So जो 62 साल पेशेंट थे रिचर्ड, सो उनको 16 मार्च 2024 को पिग की किडनी लगाई गई थी. सो उनकी मौत कब हुई? मई 11, 2024, यानी कि वो तकरीबन 1.5 मंथ तक जिंदा रहे और फिर उनकी मौत वाक़या हो गई. Which country won the 2024 Sultan Azlan Shah Cup? So जापान ने ये जीता. The 2024 Sultan Azlan Shah Cup was hosted by इसको किस मुल्क ने? तो इस कप की मेजबानी की मलेशिया ने. For how many years India has secured a deal with Iran to cooperate its Chabahar port? So 10 years तक इन दोनों कंट्रीज के दरमियान अभी डील है. How many countries have landed a robot on the moon? So 6 countries ये कारनामा सरअंजाम दे चुकी हैं. World first conversational AI with emotional intelligence is उसका क्या नाम है? EV. Fifth Pakistan-China Foreign Ministers Strategic Dialogue held on days in China in Beijing, China. So May 13 to 16, 2024. Fifth Pakistan-China Foreign Ministers Strategic Dialogue ये जारी रहा था. Which Indian won the gold medal in men's javelin throw at Federation Cup 2024? So ये नीरज चोपड़ा है. Which country hosted the Cannes Film Festival award ceremony in May 2024? तो फ्रांस है. The name of newly built cricket stadium near New York, the USA is. So उस क्रिकेट स्टेडियम का क्या नाम है? नाउसा काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, बट इसको अभी खत्म कर दिया गया है. सो द रिसेंट इन मोब अटैक ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स इन द किर्गिज कैपिटल ऑफ बिश्केक in which 5 Pakistani were injured happened on Daesh 2024. So ये 17 मई को जो है ना ये किर्गिज कैपिटल बिश्केक में एक मॉब अटैक हुआ था फॉरेन स्टूडेंट्स पर, जिसमें 5 पाकिस्तानी भी शामिल थे. Saudi Arabia held its first fashion show featuring swimsuit models on May 17, 2024. यानी कि अयाशी का पहला जो एक शो था वो सऊदी अरेबिया ने कब किया? 17 मई 2024 को. Iranian president was traveling by helicopter in the country East Azerbaijan province when it's crashed in a forested area in Dish region. So ये वर्जेकान रीजन में ईरानियन प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर क्रैश हुई इब्राहिम रईसी की. A trans woman crowned at Miss Pink Nepal in 2024 नेम. So उसका क्या नाम है? अनमोल राय. President of Iran Ibrahim Raisi died in helicopter crash on May 19, 2024 को इनकी मौत वाक़ई हुई. Recently, which country overtake US as India largest trading partner in fiscal year 2024? So वो चाइना है. The Shangri-La Dialogue 2024 was held in Singapore on. So ये कब हुआ? May 31 to June 2nd. Theme of World No Tobacco Day 2024 is protecting children from tobacco industry interference. The T20 World Cup will be played in. So ये कहाँ पे खेला जाएगा? 2024 का जो T20 World Cup था वो यूएस एंड वेस्ट इंडीज में खेला गया. Which country is the global host of the World Environment Day 2024? So वो सऊदी अरेबिया है. What is the theme of World Environment Day 2024? So land restoration, desertification and drought resilience. ठीक है. अभी जून की जाने वाले जाते हैं. So who is the first woman president of Mexico? So Claudia Sheinbaum. So ये first woman president है Mexico की. Which Middle Eastern country will host a round of the World Rally Championship from 2025 as a part of a 10-year agreement? So Saudi Arabia जो है ना मिडल ईस्टर्न जो कि होस्ट करेगी वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप को. China landed and uncrew the Chang'e 6 spacecraft on the South Pole Atkin Basin on Daesh to retrieve the world's first rock and soil samples from the dark lunar hemisphere. So 2 जून 2024 को चाइना का Chang'e 6 नामी स्पेसक्राफ्ट जो है वो लैंड हुआ मून का जो डार्क लूनर हेमिस्फेयर है वहां पर. Which country ruling African National Congress Party lost its 3-decade-old absolute majority in 2024 elections. So South Africa की ये पार्टी है. The 68th session of the subsidiary bodies of UNFCCC will take place from June 3 to 13, 2024 at World Conference Center, Bonn, Germany. According to WHO, Danish people died each year due to air pollution. So 6.7 million यानी कि तकरीबन 67 लाख लोग. Which former US astronaut who took the historic Earthrise photo from space over 55 years ago died in a plane crash on 7 June 2024 at the age of 90? So उसका क्या नाम है? विलियम एंडर्स.
Over 2,000 countries signed a wishful declaration of peace with the ocean on 2024 in Costa Rica. So June 8, 2024 को कोस्टा रिका में 2000 यानी 24 कंट्रीज ने इस पर साइन किया. Daesh has become the latest Central European country to formally recognize Palestine statehood. So ये स्लोवेनिया है. जून 2024 में इन्होंने recognize किया. Which country has decided not to renew its 80-year petrodollar deal with the US? Saudi Arabia. Who won the 2024 French Open men's single title? So Carlos Alcaraz. Indian Prime Minister Narendra Modi was sworn in on June 9, 2024 for a term. So तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के. Where was the 112th session of the International Labour Conference of International Labour Organization held recently? So Geneva, Switzerland में 112th session हुआ ILO का. Which country vice president Solus Chilema and 9 other were killed recently in a plane crash? So मलावी के वाइस प्रेसिडेंट और उसके साथ मजीद 9 मेंबर्स थे. इनकी प्लान क्रैश हुई जून 2024 में. विच कंट्री रैंक्स टॉप इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024? सो वो आइसलैंड है. The 50th G7 summit was held in Daesh from June 13 to 15, 2024. So इटली में ये हुआ. What is the theme of World Food Safety Day 2024? So prepare for the unexpected. अभी जुलाई की जाने आ जाते हैं. सो विच कंट्री विल बिकम द न्यूएस्ट एंड 10th मेंबर ऑफ द एससीओ? सो वो बेलारस है. विच कंट्री टू होस्ट द 24th मीटिंग of the SCO head of state? So वो कजाकिस्तान है. Which days observed as International Plastic Bag Free Day? So वो 3 जुलाई. The third US conference on Afghanistan. So ये किस मुल्क में हुआ? दोहा, कतर में. The Taliban for the Daesh time participate in the UN conference on Afghanistan. So पहली बार तालिबान ने जो कि कॉन्फ्रेंस है अफगानिस्तान पर, थर्ड कॉन्फ्रेंस, इसका थर्ड एडिशन था कतर में. सो इसमें पहली बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया. वर्ल्ड जूनोसिस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 6 जुलाई 2024 को ये ऑब्जर्व किया जाता है. और इसका जो थीम है वो है वन वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस. ठीक है. अब किस कंट्री ने जुलाई 2024 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की वो मेंबर बनी? ठीक है, एज इट्स 5th फुल मेंबर. सो बांग्लादेश है वो. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 11 जुलाई को. ठीक है. अब जो थीम था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का वो था टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन. जिमी एंडरसन जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, उसका किस मुल्क से ताल्लुक है? इंग्लैंड से. ठीक है. अब 2024 का मेंस विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप किसने जीता? सो कार्लोस एल्कराज ने. ठीक है. और 2024 का वुमेन्स विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती? बेरबोरा क्रिजिकोवा. ठीक है. रिसेंटली खदका प्रसाद शर्मा ओली हैज बीन स्worn in as the prime minister of which country for 4 times? ये नेपाल की चौथी बार ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं. जो 2024 का जो ये यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप है वो किस मुल्क ने जीता? स्पेन ने जीता. विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर एनिमल हेल्थ इमरजेंसी आफ्टर न्यू कैसल डिजीज केस? सो ब्राजील में जब न्यू कैसल डिजीज केसेस हुए तो उन्होंने नेशनल एनिमल हेल्थ इमरजेंसी वो डिक्लेयर की. विच कंट्री वॉन दैट 48th कोपा अमेरिकन टूर्नामेंट? सो अर्जेंटीना ने ये जीता. इन जुलाई 2024 European Parliament re-elected German politician Daesh as the European Commission President for another 5-year term. So Ursula von der Leyen. Which city hosts the 2024 Summer Olympics? So Paris, France ने इसकी मेजबानी की. For the first time in the Summer Olympics history, the traditional opening ceremony was not held in a stadium but in the open on the scene. यानी कि पानी और इन जगहों पे यानी कि खुले आसमान के तले हुआ था ये. अभी अगस्त की जाने बात है. वीडियो थोड़ा हमने अभी शॉर्ट करना है क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी, पर सारे मंथ्स को कवर करेंगे, बट कुछ को हमने अभी स्किप कर दिया है. ठीक है. तो वो आपको पीडीएफ फाइल में भी मिल जाएंगे. ठीक है. विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट ऑन 30 अगस्त 2024 ऑर्डर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स टू बी शट डाउन इन द कंट्री? सो ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त 2024 को ये ऑर्डर दिया कि ट्विटर को जो है ना ब्राज़ील में बंद कर दो. ठीक है. 30 अगस्त 2024 28 अफगान नेशनल क्रिमिनल्स, ठीक है, उसको डिपोर्ट किया गया है अफगानिस्तान में दोबारा से. तो ये किस कंट्री ने किया? जर्मनी ने ये काम किया. ठीक है. Recently, Shannon Gabriel and David Milan retired from international cricket. Which countries do they belong to? So Shannon Gabriel वेस्ट इंडीज से इनका ताल्लुक है और डेविड मलान का इंग्लैंड से है. ये 2024 समर पैरालंपिक भी हेल्ड इन. ये कहाँ पे हुआ था? ये फ्रांस पेरिस में हुआ था. ठीक है. पैरालंपिक्स एक ओलंपिक्स है वो भी फ्रांस में हुआ था. ठीक है.
How many nations participating in the 2024 Summer Paralympics में अब 170 nations ने participate किया. Where was the 24 International Mother Teresa Awards ceremony held? तो ये कहाँ पे हुई? दुबई में हुई. In August 2024, 18th member state of the United Nations Command in South Korea. So 18th member state जो है UN command का जो कि साउथ कोरिया में है वो कौन सी कंट्री है? जर्मनी. ठीक है. In August 2024, who was sworn in as the new and youngest Prime Minister of Thailand? So ये बड़ा important one है. Youngest Prime Minister of Thailand कौन है? So Shinawatra ये youngest Prime Minister है थाईलैंड के. ठीक है. In August 2024, which country reintroduced compulsory military service to Croatia? अभी सितंबर की जानब आ जाते हैं. सो हार्पून मिसाइल इज डेवलप बाय विच कंट्री? सो इसको किस मुल्क ने डेवलप किया है? यूएसए ने. सो ठीक है. रिसेंटली विच कंट्री होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल डिफेंस एग्जीबिशन यूरो नेवल 2024? सो फ्रांस ने इसको होस्ट किया. यूज हर्ट फॉर एक्शन इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे? सो ये वर्ल्ड हर्ट डे 2024 का थीम था. On 29 September 2024, Israel launched attack in Daesh against the ports of Al Hodeida and Ras Isa. So यमन की ये पोर्ट्स है दोनों. सो इसराइल ने 29 सितंबर 2024 को यमन के इन पोर्ट्स को निशाना बनाया. Name of the Hezbollah leader who was killed in an Israeli airstrike on Beirut, Lebanon on 28 September 2024. So Sayyed Hassan Nasrullah. So ये कमांडर थे हिजबुल्लाह के. सो उनको इसराइल ने लेबनान में वो कत्ल किया 28 सितंबर 2024 को. What was the main reason for Hezbollah formation in 1982? To combat Israeli occupation of southern Lebanon. ठीक है. What is the theme of World Tourism Day 2024? So tourism and peace ये theme था. Navigating the future safety first is the theme of which international day in 2024? So ये World Maritime Day का theme था. Which day is observed as World Environment Health Day every year? So 26 सितंबर को World Environment Health Day हर साल ऑब्जर्व की जाती है. अक्टूबर की बात करें तो 8 एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव. सो ये कहाँ पे हुआ? रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ. टुडे रीजनल कॉन्फ्रेंस of the International Search and Rescue Advisory Group was held in. So ये कहाँ पे हुआ? इस्लामाबाद पाकिस्तान में. और 45th एनुअल फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन. ठीक है. सो इसका जो एनुअल फोरम था, ये इसकी जो मीटिंग थी वो काफ़ी वो भी इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई. Who has been elected as the new Secretary General of Hezbollah on October 29, 2024? So Naeem Qasim. Israel Parliament on 28 October 2024 approved a bill for banning which UN agency activities in Israel and occupied East Jerusalem. So the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees यानी कि UNRWA. Where was the Commonwealth Heads of Government Meeting 2024 held? So ये काफी हुई थी समोए में. ठीक है. What is the theme of the 16th Conference of the Parties यानी कि COP 16 का जो है उसका थीम क्या था? सो पीस विद नेचर. ठीक है. Which country joined the BRICS in 16 summit? So ईरान, इथोपिया, UAE and Egypt. नवंबर की जाने बातें हैं. So who is set to return to White House as the 47th president of the US? So वो कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प 47th president होंगे US के. In November 2024, who became the first black woman to lead the UK Conservative Party? So वो कौन है? Kimi Badenoch. Who is the current president of Botswana? So Duma Boko. Who was the seventh? When was the seventh session of International Solar Alliance held from 3 to 6 November 2024 को ये held हुआ. An intercontinental ballistic missile Hwasong 19 is developed by which country? So North Korea ने इसको develop किया है. On November 16, 2024, US President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping meet on the sidelines of which event? So Asia Pacific Economic Cooperation Summit पीरो का जो summit था उसके sidelines में इन दोनों की मुलाकात हुई. Which newspaper announced on November 13, 2024 it would no longer post content from its official account on Elon Musk X? So The Guardian ने ये announcement की. Which country is set to build a mindfulness city named Gilafu Mindfulness City? So ये किस मुल्क ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है? भूटान ने. दिसंबर की जाने बात आते हैं. So which country launched a new amphibious assault ship named Sichuan? So चाइना ने ये शुरू किया है 30 दिसंबर 2024 को. कितने तालिबान ट्रूप्स को पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर वो डिप्लॉय किए गए? 15,000 ट्रूप्स को. ठीक है. कब प्रेसिडेंट अलिव ने रशिया पे इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने जो है इनके ड्रोन्स ने हमारे प्लान को क्रैश किया? 29 दिसंबर 2024 को एलियव ने अजरबैजानी जो प्रेसिडेंट उन्होंने इल्ज़ाम लगाया. कब जो है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपोलोजाइज किया रशियन एयरप्लेन क्रैश के लिए? 28 दिसंबर 2024 को. कब इसराइली आर्मी ने कमाल अदवान हॉस्पिटल पर
वो अटैक किया और वहाँ के पेशेंट और स्टाफ को बंदी बनाया और उनको फोर्सफुली हॉस्पिटल से निकाला 27 दिसंबर 2024 को। कितने लोग अजरबैजानी एयरक्राफ्ट क्रैश में उनकी मौत वहाँ की हुई? 38। What is the name of the Azerbaijani aircraft that crashed near Akatu International Airport? तो गुसार उस एयरक्राफ्ट का नाम था। अब ये जो प्लान क्रैश था ये कहाँ पे हुआ? नियर अकाटू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कजाकिस्तान में ये वाक़या हुआ। व्हेन डिड द अज़रबैजानी प्लान क्रैश हैपन? 25 दिसंबर 2024 को ये हुआ। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग इन यूथ एंड सपोर्टिंग एसएमईज शेपिंग टुमारो इकोनॉमी इज द थीम ऑफ, सो ये किस चीज़ का थीम था? 11D8 समिट।